Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that today we are going to start a new unit, and the name of our unit is School. It is unit number 7 और आज हम इसका introduction start करेंगे. That is lecture number 0. So my dear students, let's get started. So this is the school, and in this unit हम school के बारे में क्या पढ़ेंगे? Let's have a short introduction. In this unit, you will learn to share information about your school. You will also learn how to behave at your school. You will understand how to respect and interact with people of different backgrounds. So my dear students, इस यूनिट में आप स्कूल के बारे में पढ़ेंगे. स्कूल में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरों को, हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आर द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस यूनिट. दे आर गिवन ऑन पेज नंबर 45. ये पेरेंट्स और टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब बच्चा ये यूनिट ख़त्म करेगा तो वो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं he will be able to deliver them, understand them and learn them. So my dear students, when we will start the first lecture, the students will be able to tell the name and location of their school. So first lecture में बच्चे अपने स्कूल का नाम और लोकेशन जो है वो बता सकेंगे. Then we will move forward towards lecture number 2, and the students will be able to identify the people they interact with within school, teachers, students, principal, service providing staff and etc. So my dear students, lecture number 2 में बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुख्तलिफ जो स्टाफ मेंबर्स हैं, मुख्तलिफ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं स्कूल के, उनको जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे. So my dear students, now let's quickly move forward towards lecture number 3. In lecture number 3, the students will be able to describe the activities they engage in at school. So my dear students, बच्चे जो है डिस्क्राइब कर सकेंगे कि वो स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लेइंग, ईटिंग, स्टडी, रीडिंग, कलरिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट. दीज ऑल एक्टिविटीज़ दैट दे परफॉर्म इन द स्कूल, बच्चे जो है उनको डिस्क्राइब कर सकेंगे. देन इन लेक्चर नंबर 4, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू शेयर एंड अंडरस्टैंड the rules they follow in the class and school, and they will also be able to understand why following the rules is important. So my dear students, बच्चे जो हैं वो शेयर कर सकेंगे कि वो कैसे जो है रूल्स को फॉलो करते हैं इन क्लास. इसके अलावा वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि फॉलोइंग रूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. Then in lecture number 5, the students will be able to appreciate diversity by understanding that they make different friends in school, and these friends can be from different social and religious backgrounds. So my dear students, lecture number 5 में बच्चों को diversity समझ में आएगी कि कैसे मुख्तलिफ backgrounds से जो हैं वो बच्चे आते हैं उनके साथ, और वो सबके साथ दोस्ती करते हैं और उन्हें सबकी respect भी करनी चाहिए. Then in lecture number 6, the students will be able to recognize that they should respect everyone in their school, like their teacher, class fellows, service providing staff, etc. regardless their faith, ethnicity and social background. इसके अलावा बच्चे जो है वो हर किसी को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे कि कैसे जो है उनको अपने तमाम स्टाफ मेंबर्स की, तमाम दोस्तों की, हर इंसान की, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, जिस मर्जी बैकग्राउंड से या रिलीजन से है, उनको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Then in lecture number 7, the students will be able to know the importance of keeping their school clean. इसके बाद cleanliness जो है वो बहुत important है. बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो cleanliness जो है उसकी इम्पोर्टेंस को के बारे में समझेंगे, और उनको पता चलेगा कि कैसे स्कूल को साफ रखना जो है वो बहुत ज़रूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. Then in lecture number 8, students will make a project. ये एक्टिविटी होगी जो बच्चे बहुत enjoy करेंगे. And lecture number 9 will be the review of this unit, जिसमें जो है तमाम SLOs को एक दफ़ा रिवाइज किया जाएगा. And this by the end, बच्चों को एक असेसमेंट शीट दी जाएगी ताकि उनको असेस किया जा सके, वैल्यूएट किया जा सके कि उन्होंने इस यूनिट से क्या कुछ सीखा. So my dear students, you will learn a lot of things from this unit. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.